Okay. तो यहाँ पर अपने को first of all we need to launch an application known as PyCharm. आपके पास अभी application नहीं है ये, so we will download it. Okay. So what you need to download is you need to go to the JetBrains website. Okay, and here you can go into search and you can search PyCharm and then that first one. Later we will also download Anaconda. ये download कर लेना है आपको. Right now I already have it downloaded, so I don't have to download. लेकिन आप ये download कर लियो. पहले community और एक enterprise edition बोल के उन्हें option देता था, लेकिन अब एक ही download में कर दिया लोग को पूरा. Okay, so download this. And other than that, you want to open PyCharm. So after downloading, I can also walk you through the setup wizard. हर क्वेश्चन पे आपको basically continue करना रहता है unless it actually asks you to agree with something. Then you press yes. Okay. You can, if you guys want, I can wait for you guys to install it all. Or you know what, at this point मैं भी download कर लेता हूँ just to see. Download. यूनिफाइड एज इन वो दोनों एक ही उसके लिए बने हुए हैं. Okay, I can close that. Okay, so it's downloading and it's going to take about how long? 1 minute. Okay, so until this 1 minute I can at least explain what Python is. So let me go to AutoJaw. Okay, and I'll clear this select. Okay, essentially what we're doing here, so Python is a language used for multiple things. Usually used for stuff like AI modeling and data science. So I'll explain what both of those are in a minute, okay? First of all, let's start with artificial intelligence. As we all know, we have things like ChatGPT, and we have Copilot, Gemini, just to name a few. These are what we call generative AIs. And then we have stuff like um, TTS, text to speech. No, not text to speech. Speech to text. And then we have stuff like classification, image classification. And then we have stuff like, so these are the two main different types of AI. So one we call generative. Okay, this is what we call generative AI. And this is what we call stuff that classification of AI. Okay, इसका काम क्या करता है, उन्हें चीज़ों को classify करता है as of the name. Suppose I have two images. Okay, I train this algorithm according to those images. Okay, so let's put, suppose, a cat in one of the images. So I'll do that, and then I'll put, oh, this is my cat. Okay, and then this is my dog.
So let's just put C for cat and D for dog. Okay. Basically, what it's trying to get at here is we plug in this image, and your classificational AI, it will output something like a result. So right now your binary is मेरा result. So 0 or 1 क्यों बोल के बोले तो there's only two outcomes. So for cat it can either output one cat अगर सही train करे या two dog because you trained it wrong. So we will go through some problems. We are not going to be doing generative AI in this course. Generative AI is a whole different field because those count in LLMs as well as just normal AI. So let's go over. Oops. Okay. Let's go over some of the things that are in AI. Okay. Before that, I'll actually just download PyCharm. क्योंकि बोले तो अब भी finish हुआ मेरा भी download हुआ. Calflossus. And then we're going to close this, and then you go into your downloads folder, and then you press the DMG file. For me, it's very simple. I just drag and drop. You guys will have a little bit more setup to finish it. This will take about 2 seconds. In Mac, the installers are usually a lot more simpler. लेकिन फिर भी ये PyCharm की भी फाइल अच्छी खासी बड़ी रहती है, so you should probably watch out for that. Other than that, now that it is downloaded, you can go to your applications folder. So for me, it's F4. आप लोग के पास ये installer को go through अब होता मेरा भी शायद processing. No, did it not work? Replace. Python, PyCharm. Okay, so this is the old one, this is the new one. This is the new one. Essentially what I'm going to do is I'm also going to delete this one. EYCH. This is the old one. Okay, so this is what it should look like. This is version 2026.1. And we can allow it to find devices on local networks. So this was what PyCharm will actually end up looking like. This is what where we will do all of our code. Okay. So let me explain the basic core functions of AI.
राइट नाउ आपको पूरा अंडरस्टैंड करने का एक्सपेक्ट नहीं करता मैं, लेकिन मैं पहले एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूँ before we get any further. So suppose I'm gonna go over some of the basic models. Okay, suppose we have a scatter plot. Okay, we did this in Tableau. Okay, this is your scatter plot. This is 0 0, and this is your plane. This is where all of your data is mapped. Okay, so you have red dots. So these represent two different things. Okay, one represents this is actually a real data set as well. But अपन लोग अपने खुद के data set के वैसे बनेंगे. Okay, so we are making screen protector test basically. Okay, flexible and text, and we're going to do resistance. Okay, basically, or breakproof thing. Okay, basically the strength and the flexibility. Okay, the strength and the flexibility. So we have some red dots. Okay, so red means break. Okay, we can write it up here, and then we use text, and then we write break, text, break, and then I'm gonna write 2 blocks down, and success. And then if we take the blue marker, then the blue is success, red is break. So I add some blue dots. Okay, shapes. Okay, yeah, that works. Why? Of course. Blue. And basically, if I go into shape, I can make dots like this. So अपने पास strength. Okay, strength is one aspect. And let's say this is नीचे है बोले तो flexible है. So if I do like good. Okay, so this is strength. And flexibility. And then we can switch this to red to represent the broken one. So 0 strength and 0 flexibility have always broken, suppose. And things in the and a lot of strength and also a lot of flexibility have also broken on impact. Okay, basically what we're trying to do here is if we have a question mark dot that we don't know a value of, suppose this dot. Okay, we don't know what this dot is equal. What we will do is we will draw a line around it with the radius of a variable k. If I take this, put it in the center right there, and then I make it bigger, the radius will equal to k. So radius as in the distance between essentially this and this, that's your radius, and this is equals to k. This is what we call the k nearest neighbors algorithm. Okay, so that's the distance k. Basically आपके पास यहाँ पर कितने डॉट्स है और ये सर्कल में कितने डॉट्स ब्लू है कितने डॉट्स रेड है उन्हें काउंट करके उसके हिसाब से बोलता एक गेस बनाता उन्हें. तो if you have suppose as we can see in this diagram,
3 blue circles, 2 red circles, so this will be blue. और अगर अपन लोग यहाँ पर डालें in the heart of all reds, वहाँ पर दिखाता there will, since there is 2 more reds, उन्हें break दिखाता, kind of like that. Okay. आज की class I wanted to keep more of a discussion, but we can start on some basic coding concepts. Okay. Since we're over here, you can create a new project, and we can call this project something like, what do we call this? First project. Cancel, minimize, cancel. So here, since we are here again, what I'm trying to do here is create a new, so we want to create a new notebook. We're trying to create a new project. For some reason, it's not letting me create a new product. New project. Here, in the name we can do Python classes 1 first project. Okay, आप लोग first project लिख ले सकते हैं, मेरे को ऐसा डाल रहा हूँ मैं, so as a reference. Click on create a welcome script. Keep it project venv. This stands for virtual environment, basically. Virtual environment. So we have your file system that starts at C. So your file system starts at C:/, and then C:/ के अंदर X files रहते, Y files रहते, Z files रहते. Basically virtual environment क्या करता कि वो एक folder उसका खुद का environment का ऐसा रहता है. It doesn't, तो जो भी है उसके खुद का एक छोटा Python interpreter यूज़ करता हूँ मैं in this section. So if we have suppose an L file, suppose this will have it has its own virtual environment. उन्हें इसके C के X folder के Python का X folder का Python नहीं यूज़ करता उन्हें, उसके पास जो Python का interpreter सेव है venv में, उन्हें वो यूज़ करता. Stuff like that. So this is your welcome script. It will be filled with this type of coding. You can run it. You can see how this works, but it's not very useful for us. And there are also things known as breakpoints. By default line पे यहाँ पर एक breakpoint आता. अगर आप run करें तो कुछ भी ना, तो debug करें बोल के यहाँ पर breakpoint है ना, तो यहाँ पर आकर रुक जाता उन्हें. फिर अपन लोग जब resume करें तो उन्हें continue करता, essentially. Since Python is an interpreted language, I also need to go over this. Python is an interpreted language. So suppose we have a file of code. Okay. We have, suppose we have hello print I L equals to for, okay, this is our coding file. Essentially जब compiler करता उन्हें ये पूरे file को bytecode में convert कर देता first. Bytecode as in this will all be converted into binary. Okay, it will take this binary
and push it through its machine compiler. So it will have a compiler. Since it's bytecode, this compiler, the system can natively run it. So like jar file, और अगर error आया तो अपने को पूरा recompile करके वो refile बनाना पड़ता है. Now new IDEs have made this easier, लेकिन Python solves that problem in a very clever way. See, Python interpreted है instead of compiled. तो interpreted बोले तो first file उन्हें first line से देखती, number 1, ये line number 1 है, तो उन्हें first ये code को byte code में convert करती. Okay, तो suppose ये code hi बुरा, और अगर proper है next line print बोल रही, this is not a proper line. Okay, तो उन्हें क्या करता, error बोलता. Okay, suppose तो अपन लोग इसको fix कर दिया. Okay, फिर hi is also not a proper line, तो उन्हें इसका भी error डालता अपने को. फिर L equals 2 is a valid line, so it will run L equals 2 and it will save L to memory. फिर उसके बाद 4 is also not a valid line, so it will not run. Essentially that is what interpreted is. So one will एक में पूरा कोड एक उसमें एकदम में पूरा कंप्लीट हो जाता और कोड हो जाता पूरा, देख लेता उन्हें. एक में it will go slower. Okay, so far any questions anyone has? Okay, तो as for reference, यहाँ पर अपन लोग एक first script basic वाली एक script बना लेंगे. Okay, and what we have to do here is after we write print, this is what we call a string. Okay, and you can usually just write, most people just do hello world here, and when you run this, यहाँ पर console में hello world बोलता है. हाँ, for example script you will always get the output of hi. You will never get an error message. जो example script है ये interpreted language को यहाँ पर explain करूँ था मैं, वो error message से कुछ ये इसका खुद का है, वो उससे related नहीं है, लेकिन ये Python से related है. Any other questions? Anyone have anything? You can either unmute or you can talk through chat. Okay, so since आज उतना further coding में नहीं जाना है मेरे को, अपन लोग कल से करेंगे coding. क्यों बोल के बोले तो आज के scope में अपन लोग ज़्यादा नहीं कर सकेंगे. So here I'll continue explaining some things. So usually मैं everyday जो भी कर रहे हैं उससे पहले explain कर रहा हूँ. So Python is used for a variety of things. Okay, things like biology, stuff like microbiology to be exact. Biology. They for using libraries like BioPython. And then there's data science, of course. There's web development.
Python, no. For web development, so Python does not need basics of C or C++ because uh, they're completely different languages. क्यों बोल के बोले तो मैं जब भी कभी फर्स्ट लैंग्वेज आप जो लर्न करना चाहिए वो हमेशा पाइथन ही चलाना चाहिए। क्यों बोल के बोले तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज है और इससे आपके कोर फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होते हैं। क्या बोले तो इसमें एल्गोरिदम्स और चीज़ें बनाना ईजियर रहता है कंपेयर टू अदर ones. ओके फॉर वेब डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर नहीं बैक एंड डेवलपमेंट का काम है। वेब डेवलपमेंट को छोड़ के डेटा एनालिसिस और ये दोनों टर्म्स बार बार आते जा रहे हैं। मैं आपको वो भी समझाता हूँ मैं क्या डिफरेंसेस हो। डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, गेम डेवलपमेंट। There are better resources to make games out there usually. Pygame is one of them. There is also GUI development, graphical user interface using tk-enter, animations, basic, using turtle, and there's also TTS, basic to advanced, multiple resources, and also some basic scripting. So scripting can involve web dev, game dev, and animations. Okay, and there's also artificial intelligence. And this one is also multiple resources. Okay. Assalamualaikum. Can you please let me know how to install Python and the basic operating systems? कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं आप पाइथन को? अलबत्ता थोड़े कॉन्फ़िगरेशन के स्पेक्स रहते हैं वो फॉलो करना रहता है। मैं आप पाइथन इंस्टॉल करना यूजुअली अब आउटडेटेड हो गया। कहीं बोले तो जब भी अपना पाइथन इंस्टॉल करें तो ऑटोमेटिक पाइगेम पूरे बेसिक मॉड्यूल पे इंस्टॉल कर देता और आपको वो पाइथन भी इंस्टॉल कर देता। मैं तो पहले आपको यू यूज टू गो टू स्टफ लाइक python.org and then you would go to like downloads and then you would download 3.14.5 or something like that. And अगर आप ऑल रिलीजेस में भी गए तो उन्हें पूरे आपको दिखाता और यहाँ पर एक्टिव रिलीजेस भी दिखाता। तो राइट नाउ द करंट स्टेबल रिलीजेस राइट नाउ मेरे को याद है जब पाइथन 3.6 रिलीज हुआ तो लोग उसका इतना बिग डील बना रहे थे। लेकिन राइट नाउ तो 3.6 टू 3.9 की एंड ऑफ लाइफ हो गई, ज़माना हो गया। 2.7 की तो बहुत पहले एंड ऑफ लाइफ हो गई। अगर आप 2.7 अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली एंड है बोल के बोल सकते हैं आप। 3.9 is done. The current latest version that you should be using is stuff like 3.14. क्या बोला तो 3.14 is in the stable release. तो releases का भी है अपन लोग एक चीज़ जो देखते हैं usually. There are two releases, stables and unstables. So there's a stable release, okay, and then there's the experiment release. Okay, experiment release.
स्टेबल का क्या है बोल के बोले तो उसमें नॉर्मल फीचर्स रहते, सिक्योर रहता वो कहीं को बोल के बोले तो टाइम से मार्केट में है, और उसका एज रहती, क्या को बोले तो एज के हिसाब से आप ट्रस्ट भी कर सकते हो उसको, अगर न्यू टेक्नोलॉजी है तो आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड देन वी हैव एक्सपेरिमेंटल का न्यू फीचर्स रहते, सिक्योरिटी उतनी खास नहीं रहती कहीं को बोले तो न्यू वर्जन है, और बग्स रहते usually. But other than that, there's advantages to using both. Um, it's usually just take your pick type thing. Um, आपके हिसाब से आप जो होना वो ले सकते essentially. So, with that said, does anybody have any questions? Anyone have anything? So basically अपन कोड किस में करते, कोडिंग पाइथन में कर रहे हैं, PYC है JRM पाइथन. Any other questions? I got to. Okay. तो आइडल से करना बेकार है कहीं को बोल के बोले तो it's currently 2026. Okay, first of all. पहले आइडल इसलिए यूज़ करते थे कहीं को बोले तो उसके साथ आ जाता था, no one really used to care, बेसिक पाइथन लर्न करने के, लैंग्वेज लर्न करने के लिए यूज़ करते. Is automate boring stuff with Python good for basics? ऑटोमेट यूजुअली आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं ना, तो आप IoT में जाके वायरों में घुस के दिमाग ख़राब करना पड़ता है यूजुअली. नॉर्मली जब आप ऑटोमेशन का बात करते हैं तो आप दो तरीक़े रहते हैं, आप इधर कंप्यूटर से ऑटोमेशन कर सकते हैं या कंप्यूटर पे ऑटोमेशन कर सकते हैं, या नहीं तो दूसरे चीज़ों को आपको रूटीन्स लगा के उसको भी कर सकते हैं. जैसा कि अगर आपको थर्मोस्टेट बढ़ाना है तो उसके लिए कर सकते हैं, AC ऑन करना है तो उसके लिए कर सकते हैं, TV ऑन करना है तो उसके लिए कर सकते हैं. तो अगर आप सपोज़ आप आके सोफे पे बैठ गए, फिर याद आया TV खोलना है, आपको उठ के जाने की से अच्छा आप फ़ोन में कर ले सकते हैं, कुछ वैसा. हाउ लॉन्ग टाइम सेट डेट नहीं है, जब तक चलना है, जब तक पूरे टॉपिक्स कंप्लीट ना. डू यू गो फॉर हैंड्स ऑन? यस. आप जो भी क्लास में लर्न करें उसको यूजुअली प्रैक्टिस करना रहता है, आज कुछ भी नहीं करें लेकिन आप फिर भी रोज़ आफ्टर क्लास हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना चाहिए. और उसके ऊपर से भी आई एम ट्राइंग टू टेक इट प्रिटी स्लोली, सो या. एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, if that's it, then I will. Yes, you should download Python. So if that's it, then any theory. आज की पूरी क्लास थियरी थी, शुरू से अपन लोग आप एंडिंग तक थ्योरीज करे थे. आज का